Good morning, students. Today we will do questions of chapter beta and gamma functions. Chapter name is beta and gamma function. Exercise 4th. Question number first, A part. We have to evaluate the value of gamma minus 3 by 2. Now we know that gamma n into gamma 1 minus n is equal to pi upon sin n pi. Put n is equals to minus 3 by 2 gamma minus 3 by 2 1 minus plus 3 by 2 is equal to pi upon sin minus 3 by 2 into pi. Gamma minus 3 by 2, this is gamma 5 by 2 is equals to pi माइनस साइन माइनस आ गया आएगा साइन 3 पाई बाय 2 गामा माइनस 3 बाय 2 इंटू 5 बाय 2 गामा 5 बाय 2 कैन बी रिटन एज 3 बाय 2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 is equal to minus pi upon sin 3 pi by 2 is minus 1 gamma minus 3 by 2 into 3/4 into gamma 1 by 2. Gamma 1 by 2 is root pi. Gamma 1 by 2 is root pi equal to pi gamma 1 by 2 is equal to root pi. On simplification we get gamma minus 3 by 2 is equals to 4 उधर शिफ्ट हुआ 3 डिनोमिनेटर में रूट पाई यहाँ से कट जाएगा we get root pi. This is the value of gamma minus 3 by 2. Now similarly B part, we are given gamma minus 9 by 2. Applying the same formula, we know that gamma n into 1 minus n gamma is equals to pi upon sin n pi. Put n equal to माइनस का 9/2 वैल्यू रखने पर गामा माइनस 9/2 इंटू गामा 1 माइनस प्लस 9/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n इज माइनस 9 पाई बाय 2. सिंप्लीफिकेशन करने पर gamma minus 9 by 2, this can be written as 9 by 2 into 7 by 2 into 5 by 2 into 3 by 2 into 1 by 2 into gamma 1 by 2 is equal to minus pi upon sin 9 pi by 2. Simplification, gamma minus 9/2 into
सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें मिलेगा 9763 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 32 इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन साइन 9 पाई बाय 2. 9 पाई बाय 2 is sine of pi by 2, which is equals to minus 1 minus 9 upon 2 into 63 into 15 upon 32. So on simplification we get gamma minus 9 upon 2 is equal to minus 32 upon 945 into pi. This is final answer for gamma minus 9 by 2. Clear? Now third part is क्लियर हो गया. वी हैव टू फाइंड गामा माइनस का 3/2. वी नो द फॉर्मूला और आइडेंटिटी गामा n इंटू 1 माइनस n गामा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई. फ्रॉम दिस पुट n इज इक्वल्स टू माइनस का 3/2. वी हैव पुट n इक्वल टू माइनस का 3/2. ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट गामा माइनस 3/2 इंटू गामा 5/2. गामा 5/2 को प्रॉपर्टी से हमने क्या लिख दिया 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 इक्वल टू में माइनस साइन 3π/2. साइन 3π/2 की वैल्यू होती है माइनस का 1. ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस. हियर वी हैव यूज द फॉर्मूला फॉर गामा 1/2. गामा 1/2 इज इक्वल्स टू रूट पाई simplify and we get the final answer. Now similarly applying the same concept in B part we get this as minus 9/2 gamma is equals to minus का 32 pi upon 945. Clear? Now C part. In C part we have to find the value of this one. Now here we observe that the formula used is gamma m into gamma 2m plus 1 divided by 2 divided by gamma 2m is equal to pi upon 2 raised to the power 2m minus 1. Clear? Gamma m into gamma 2m plus 1 upon 2 upon gamma 2m is equals to root pi upon 2 raised to the power 2m minus 1. We observe that here m is equals to 1/3. Put m is equals to 1 upon 3. We get gamma 1 upon 3 gamma 2/3 plus 1 5/3. 5/3 divided by 2 is 5/6. y/6 whole over gamma 2 upon 3 is equal to root pi divided by 2 raised to the power 2m minus 1. So 2 into m is 1 upon 3. 1 upon 3 minus का 1. सिंप्लीफाई करने पर रूट पाई ओवर ये आएगा 2 की पावर माइनस का 1 अपॉन 3. सिंप्लीफाई किया रूट पाई इंटू 2 की पावर 1 upon 3. Clear? Here we observe that this is of the form gamma m into gamma 2m plus 1 divided by 2 whole over gamma 2m, which in turn is equal to root pi upon 2 raised to the power 2m minus 1. On putting m is equals to 1 upon 3, we get final answer. Clear? Now, in next class, we will do remaining questions. Thank you.